अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जो जॉब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले जो व्यूवर चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल की मिलती रहे। अब चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। शुहदाए-APS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशेरा ने कुछ वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट की है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज़ है और उसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। SHUHDA-E Army Public School, University of Technology, NOWSHERA invites application form eligible male and female candidates of KP to fill the following position on regular basis. सबसे पहले जो सीट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हैं और इसमें जो डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इसमें एज लिमिट है 40 ईयर्स। और ये पे स्केल इसका BPS 19 है। PhD इन रेलिवेंट सब्जेक्ट from HEC recognized university or institution. No third division in entire academic career. 3 years of teaching experience in engineering technology programs at higher education commission recognized public or private university DAI and BPS 18 or equivalent or above as full-time employee. नेक्स्ट जो सीट्स हैं हमारे पास लेक्चरर्स की हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। एज लिमिट है 35 ईयर्स और पे स्केल है BPS 18। और जो डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नो थर्ड डिवीजन इन द एंटायर एकेडमिक कैरियर। 3 year of teaching experience in engineering technology program and higher education commission recognized public or private university DAI and BPS 17 are equivalent or above as a full-time employee. ऑडिटर BPS 17 की सीट्स हैं। इसमें एज लिमिट है 18 से 45 साल। फर्स्ट डिवीजन MCOM MBA with specialization in accounts or second class MCOM MBA with specialization in accounts or with 5-year relevant experience in accounts in a university or a government department or an autonomous organization. असिस्टेंट रजिस्ट्रार एज लिमिट 18 से 45 साल है। BPS 17 की ये सीट्स हैं। फर्स्ट डिवीजन मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंग्लिश विद 5-year एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन a university or a government department or an autonomous organization. असिस्टेंट डायरेक्टर P&D एज लिमिट है 18 से 45 साल। 17 की ये सीट्स है। फर्स्ट डिवीजन MA इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, MBA MCOM with 4-year experience in the relevant field in a university or a government department or autonomous organization. Preference will be given to the candidate having experience of procurement in government organization. IT एडमिनिस्ट्रेटर एज लिमिट 22 to 40 years। 17 की ये सीट्स हैं। इसमें एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री 4 years इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड आफ्टर 16 year of education from HEC recognized university institution with 2 year of relevant experience. टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए कि तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए आपके पास PEC NTC रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है और लास्ट डेट जो है वो 9 सितंबर 2021 है। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन. Incomplete application and application received after due date will not be entertained. Only shortlisted candidate who fulfill on the above mentioned criteria will be contacted for test and interview. In service candidate may apply through proper channel. Age relaxation will be given in light of government roles on case-to-case basis. Income in case of any information or document provided by the candidate found incorrect or fake at any stage, the candidate will be disqualified immediately. The university reserves the right to increase or decrease the number of positions or to be cancelled any or all the positions at any stage without assigning any reason. Application processing fee of 3,000 for BPS 19, 2,500 for BPS 18 and 2,000 for BPS 17. May be submitted and original receipt must be sent along with the application form. Account title है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा. अकाउंट नंबर है
3001160687 और बैंक ऑफ हैबर कंटोनमेंट ब्रांच नौशेरा ब्रांच कोड है 0104। The candidate applying for more than one position should submit separate application along with original bank receipt for each position. Candidate are required to visit the university website regularly for updates. Error in the advertisement, if any, are liable for rectification by the university. और ये एडवर्टीज़मेंट दी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट शुहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशेरा एक्स आदमजी पेपर एंड बोर्ड मिल अमानगढ़ नौशेरा और फ़ोन नंबर है 0923560301। That's all about today's advertisement. We welcome soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please watch, share, like our videos and support us. Thank you.